अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पहले मैं एक बात इस प्रोग्राम से पहले क्लियर कर दूं सारों को कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है, सेंसिबल आदमी या औरत, वो जंग के हक़ में नहीं बात कर सकता। मैं दुनिया में जहाँ पे भी जंग होगी, मैं उस जंग की आप समझें कि मुखालफत ही करूँगा। आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन जो समझता है कि अमन को चांस होना चाहिए, पीस टॉक्स को चांस होना चाहिए। बट हम देख ये रहे हैं कि गाज़ा में शुरू से, पहले दिन से 1948 से वो हालात हैं कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा स्वाय अपने बचाव के लिए हथियार हाथ में उठाने के लिए। अब 4 दिन पहले, आज चौथा दिन है जो हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर, खुद बकौल इजराइल के उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो डिफेंस था, जिसको परसीव किया जाता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है पूरी दुनिया में, वो बड़ी बुरी तरह पेनिट्रेट हुआ और मल्टीपल एरियाज़ में ब्रीच हुआ। और वहाँ से हमास वाले जो थे वो पैराट्रूपर्स के ज़रिए, मोटर बाइक्स के ज़रिए, मोटर बोट्स के ज़रिए वो जो है वहाँ पे दाखिल हुए। कोई 1000 के करीब हमास के जंगजू जो थे वहाँ पे गए। और अभी तक जो हमें इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि हमास ने जंग बंदी से या पीस टॉक से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जो प्रिजनर्स के रिटर्न का या प्रिजनर्स का जो फ्यूचर का मामला है वो जंग बंदी के बाद होगा। अच्छा, दूसरी तरफ इजराइल जो है उसने जवाबी बहुत बुरी रिटेलिएशन शुरू कर दी है और फ़लस्तीन के अंदर गाज़ा की दूसरी साइड पे जो आप समझें कि जो सिविलियन आबादी है उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी कैजुअल्टीज़ हैं। कल से उन्होंने अभी तक जो है पानी बंद कर दिया है वहाँ के गाज़ा बेल्ट का, गाज़ा स्ट्रिप का। हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं, पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है पूरी दुनिया में, फॉर एंड अगेंस्ट, या लोग इस साइड पे हैं या लोग उस साइड पे हैं। न्यूट्रल अभी तक कोई भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा मुल्क है जिसने ऑफ़र की हो कि मैं दोनों के दरमियान पीस करवाता हूँ या नहीं करवाता ताकि किसी तरह ख़त्म हो यहाँ पे। बट मेरे पास आज जो मेहमान हैं, तीनों बड़े ही अहम मेहमान हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ़ कराऊँ कि डॉक्टर मलिया लोधी हमारी यानी ये सफ़ीर भी रह चुकी हैं अमेरिका में भी और बरतानिया में भी। और उससे बड़ी बात यह है कि ये हमारी जर्नलिस्ट है। ये इन अ प्रीवियस लाइफ शी वॉज अ जर्नलिस्ट। हमें ज्वाइन किया हमारे दोस्त ने, अब्दुल बासित साहब ने, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस के बहुत ही सीनियर ये सफारतकार हैं। और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे वी आर जॉइंड बाय नादर अल तुर्क, हु इज़ द डिप्टी हेड ऑफ मिशन फॉर द एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me ask Mr. Nader Al-Turk. So welcome to Khara Sach and welcome to PNN. I would like to know, in your words, the actual ground situation in your country right now. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Situation right now, our Palestinian people under collective punishment by the Israelis. Israelis leadership looking for revenge by creating a human crisis in Gaza Strip by keeping our civilian people under attacks in 3 days. They freeze and block supply of water, gas, fuel, food, electricity to Gaza, and they block the supply of medical equipment, which mean more than 4,000 injured civilian people under danger right now. Their life under danger. The old people, the sick people under their life under danger, because this is collective punishment by the Israelis against the civilians of in Gaza. Even they are warning the Egyptian government, if they are supplying any medical supply or any food to Gaza, they're going to attack the trucks who are holding this humanitarian supply for Gaza people. This is the honest situation right now in Gaza. Actually, the Israeli leadership by this crime against humanity, against the Palestinian people in Gaza, they try to increase the losses of Palestinians to make balance
in the losses by the Israeli side and Palestinian side, because this is the first time ever the Israelis losses huge in this number. They have more than 1,000 Israelis killed, more than about 4,000 Israelis injured. So they are trying to look strong in the eyes of their people to keep them in power. Because they are right now, the image of Israel was damaged, was really destroyed as a superpower country. The failure, their intelligence system, their security system, their power to defend themselves this image was actually damaged completely, and I think that is damaged once forever. Because before the Israelis was marketing by the Americans, marketing with the international world as a superpower country in the region. It can defend itself and can defend even the Middle East area, the region of the Middle East. Right now, Israel become like a tiger made by paper, can defend itself against a small group of freedom fighters. This is the situation right now. Right. We hope this crisis, this crazy can be end Mr. Nadir, by getting stability very soon. I will come to it. I will come to it. We have many questions to ask. I want you to understand one thing. As a Pakistani, we are all with the Palestinians and we stand with the Palestinians. But as a journalist, I have to ask you some painful questions as well. That is also my job. Now, BBC and Sky News and everyone has been reporting that Hamas soldiers first went in and they attacked a rave party that was going on in one of the villages over there, and there were only tourists and other women and other young people who were unarmed, and they were killed indiscriminately. So now all this killing of civilians is as a result of that. What do you have to say on that? Actually, they try to getting excuse because they are right now attack only Palestinian civilians in Gaza. They didn't target any freedom fighter in Gaza. They are targeting only women, children. We speak about more than 1,000 Palestinian shaheed. About right now it is about 700 or 830, sorry, the latest number, 830 shaheed in Gaza. Most of them are women and children. More than 4,000 injured people in Gaza. Most of them women and children. All the victims are civilians. Fair enough. I'll come to it. Over their head. So they try to giving a same story for the Palestinian freedom fighters to defend themselves. Fair enough. That they didn't make a crime against humanity. Fair enough. डॉक्टर मालिया लोधी, शुक्रिया बहुत बहुत आपने हमें ज्वाइन किया. आप देख रही हैं कि ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया में पोलराइजेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. लोगों ने अपनी अपनी साइड्स लेना शुरू कर दी हैं, मुख्तलिफ ममालिक ने. और जो पीस प्रोसेस हो रहा था इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में, वो एकदम से रुक गया. और आई मीन यू कांट ब्लेम देम फॉर दैट, बट वो रुक गया. अब आप क्या देख रही हैं सिचुएशन को अनफोल्ड होते हुए आगे? मुबशर, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो इजरायली नॉन स्टॉप अटैक्स और बम्बार्डमेंट हो रही है गाजा में, जिससे कि कत्ले आम हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीनियों का, उसके बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि अफसोस है कि मगरबी ममालिक जो हैं उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त गाजा का जो नाकाबंदी की है इसराइल ने, वो एक वॉर क्राइम है. बल्कि यूएन के जो ह्यूमन राइट्स चीफ हैं उन्होंने तो यही कहा है कि अगर आप एक पूरी कम्युनिटी, क्या एक पूरे इतने 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं गाजा में, उनका आप सब कुछ बंद कर देते हैं, खाना नहीं जाने देते, कुछ भी नहीं जाने देते, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. अब मैं आती हूँ मुबशर, जो आपने कहा कि पोलराइजेशन की बात. अब यही पोलराइजेशन है जिसकी वजह से, जिसकी जिम्मेदारी है इस वक्त किसी किस्म का डी एस्केलेशन कराने के लिए, और जिसको आप कहते हैं कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या किसी किस्म का अमन बहाल करने के लिए, वो जिम्मेदारी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि वर्ल्ड बॉडी है जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. मगर क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? 2 दिन पहले एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल होती है और वहां पर मगरबी ममालिक जो है वो बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं लेते इन सीज फायर.
उनको सिर्फ एक दिलचस्पी होती कि किसी तरह से हमास को कंडेम किया जाए और बिल्कुल एक वन साइडेड पोजीशन ली जाए। रूस की तरफ से, चीन की तरफ से मैं समझती हूँ कि जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कोशिश की कि किसी किस्म की डी एस्केलेशन की बात की जाए, लेकिन हुआ क्या कि एक स्टेटमेंट नहीं निकल सका काउंसिल से, एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सके ये कि जिसमें कि वो कुछ तो कहते हैं इसके बारे में, फलस्तीन के बारे में। तो जिस पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं उसकी रिफ्लेक्शन काउंसिल में, और उसकी वजह से ही मैं समझती हूँ ये जंग जारी है। लेकिन ये भी जरूर है, मेरा ख्याल है हमारे लिए जरूरी है इस बात को तस्लीम करना कि अगर मगरबी ममालिक इस वक्त इसराइल पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं करते, उसको इसराइल को रोकते नहीं है जो कत्ले आम इसराइल करने जा रहा है, तो आई एम सॉरी, तो वो भी फिर कंप्लिसिट होंगे इसमें। डॉक्टर लोधी, क्या आप समझती हैं कि यूनाइटेड नेशंस का पूरा चार्टर जो है उसको रिविजिट करना पड़ेगा और वो इनफेक्टिव हो चुका है? दो सबसे पुराने इश्यूज, चाहे कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, ये सिंस इंसेप्शन ये उनके टेबल पे पड़े हुए हैं और यही जो है यानी तवज्जो तलब है। नहीं मुबशर, चार्टर का कोई मसला नहीं है, चार्टर में तो सब कुछ है, लेकिन अगर चार्टर को कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है और जो वजह है जिसकी वजह से ये जिनकी आपने बात की, जो रेजोल्यूशन है बेतहाशा फ़लस्तीन पे और कश्मीर पे, वो ना इम्प्लीमेंट जो हुए हैं, उसकी वजह क्या है? चार्टर तो नहीं है उसकी वजह है बिग पावर पॉलिटिक्स। जो बिग पावर्स है वो होने नहीं देते इसकी इम्प्लीमेंटेशन, और बिग पावर वही है जो मगरबी पावर्स है। इस वक्त 3 पावर्स हैं जिन्होंने इस काउंसिल मीटिंग में, जिसका मैंने तज़किरा किया, कोई इस तरह की बात नहीं की कि भी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज होनी चाहिए और किसी किस्म की इस जंग बंदी करवानी चाहिए। वो 3 कौन है? यूएस, यूके, फ्रांस। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि देखें, चार्टर इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मुल्क में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें तो कोई खराबी नहीं है, मगर अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता या वायलेट करता, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि जो सिनारियो है इसमें आप हमास ले लें, हिजबुल्लाह ले लें, सीरिया के आप बागियों को ले लें, आप यमन के लोगों को ले लें, तो मिडल ईस्ट के सारे कार्ड्स पहली बारी ईरान की जेब में पड़े हुए हैं? लग रहा है आपको ऐसा? आई डोंट नो किस हद तक हम ये कह सकते हैं, बिकॉज देखें इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें तो सारों का ही लॉस है मेरा ख्याल है, इसलिए कि सबसे ज्यादा लॉस तो फलस्तीनियों का है। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है ईरान को के बारे में ये इल्जाम लगा रहे हैं मगरबी ममालिक, मीन फॉर्मली तो नहीं कह रहे मगर उनके मीडिया तो जरूर कह रही है कि ईरान जो है उसने हमास को असला दिया और ट्रेनिंग दी। हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको आज डिनायल देनी पड़ी इसकी और कहा कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारी सॉलिडारिटी है फलस्तीनी आवाम के साथ। डॉक्टर मलिया, कल, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने कल बीबीसी खुद सुना है, वो कह रहे हैं $100 मिलियन पर एनम ईरान दे रहा है हमास को। देखिए मुबशर, जो वेस्टर्न मीडिया का हाल है इस वक्त, मैं क्या कह सकती हूँ, आप सोशल मीडिया पे जाएं और देखें कि लोग, उन्हीं के लोग यानी कि मगरबी सिटीजन्स क्या कह रहे हैं अपने मीडिया के बारे में, वन साइडेड, और बिल्कुल फोकस नहीं है कि फलस्तीनी आवाम पे इस वक्त क्या गुजर रही है। तो अगर बीबीसी कहता है या कोई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट कुछ कहती है तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू बिलीव दैम। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये अनकरीब ये जंग खत्म हो जाएगी या रुक जाएगी, कर्टेल हो जाएगी, या ये चलती रहेगी? देखिए, जो इजराइल के वजीर आजम है उसने तो यही कहा है ना कि ये तवील जंग होगी, ये मुश्किल जंग होगी लेकिन तवील जंग होगी। और इस वक्त अगर कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा इस जंग को बंद करने के लिए, तो फिर तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, एक तो वी आर लुकिंग एट अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इन गाजा एंड हम देख रहे हैं एक मैसेकर ऑफ पैलेस्टीनियंस। व्हाई इज पाकिस्तान साइलेंट ओवर इट, मलिया लोधी? नहीं मुबशर, साइलेंट तो नहीं है। आई थिंक बड़ी डॉर्मेंट किस्म की स्टेटमेंट है ना, वो भी 3 दिन के बाद। नहीं हाँ, आप कह सकते हैं कि बड़ी कॉशियस स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है जरूरत इस बात की है, बिकॉज अब हम जो देख रहे हैं जो हो रहा है गाजा में, जरूरत ये है कि पाकिस्तान को जरा स्ट्रॉन्गर पोजीशन लेके we should call for a de-escalation. We should call on the Western powers to end their support, which is leading to the carnage
and the massacre of Palestinians. I agree with you. Dr. Malia Lodhi, thank you for being with us. Dr. Malia Lodhi की आप बात सुन रहे थे, बहुत हमारी सफारतकार हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और वर्ल्ड मीडिया को समझती हैं क्योंकि ख़ुद उन्होंने पाकिस्तान ने मीडिया को हेड किया है बड़ी देर। अब्दुल बासित साहब आपने सुनी, डॉक्टर मलिया लोधी की भी बात सुनी, आपने नाज़र अल तुर्क साहब की भी बात सुनी। क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये मुबशर साहब कि हमें चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहिए। ये दो रियासतों के दरमियान जंग नहीं हो रही, ये एक ऑक्यूपायर और ऑक्यूपाइड लोगों के दरमियान एक मामला है। और आप जानते हैं कि गज़ा की पट्टी पिछले 17 साल से ब्लॉकेड है वहाँ पे। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद एक 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई, लेकिन जब अब्राहम एकॉर्ड्स हुए 2018 को तो एक उम्मीद पैदा हुई कि चलिए अब इसकी वजह से शायद इसराइल जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ वापस आएगा। लेकिन हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जब पिछले माह UNGA जनरल असम्बली में ख़िताब किया, उसमें जो नक्शा उन्होंने दिखाया नया, उसमें फ़लस्तीन बिल्कुल गायब कर दिया। और इस वक्त जो इसराइल में हुकूमत है, फार राइट हुकूमत है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहा। अब जब फ़लस्तीनी पिछले 74-75 सालों से इस एक मुहासरे की इस कैफियत में हैं, तो उनसे अब क्या तवक्को रख सकते हैं, वो क्या करें? आज़ादी के लिए ऑब्वियसली आज़ादी की तहरीकों में इस तरह ही होता है, कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं। लेकिन अगर इसराइल की ये खुशफहमी है कि वो इस तहरीक को दबा देगा, या भारत की ये खुशफहमी है कि वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तहरीक को दबा देगा, ये होता नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि ये पहले तो हमें, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान के दफ्तर हमारा जो रिएक्शन आया बहुत ही माइल्ड था। कम अज़ कम ये फ़र्क तो हम वाज़े करते कि एक ऑक्यूपाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ आज़ादी की जद्दोजहद है, हमने उस फ़र्क को ही मिटा दिया। और हमने अपना जो एक असूली मौक़िफ़ हमेशा कश्मीर के हवाले से भी रहा, फ़लस्तीन के हवाले से भी रहा, हमने उसको भी अंडरमाइन किया। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमने इस किस्म की, इससे बेहतर था कि स्टेटमेंट ही ना देते, अपना जो असूली मौक़िफ़ है उससे हम पीछे हटे। अब देखना ये है कि कल अरब लीग का इजलास होने जा रहा है, उसमें भी ऑब्वियसली डिवीजन्स हैं। सऊदी अरब और कुछ और ममालिक चाहेंगे कि अब्दुल बासित साहब, बड़े अदब के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, OIC का मतलब है OIC, बस। नहीं, मैं अरब लीग की बात करूं। अरब लीग भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी डिवाइडेड है। OIC का तो ईरान ने कहा, कॉल दी कि OIC का इजलास होना चाहिए, लेकिन अरब लीग नहीं चाहेगी कि ईरान किसी ऐसे कन्क्लेव में शामिल हो जहाँ उसकी पार्टिसिपेशन इस वक्त हो। लेकिन सूरत हाल गंभीर है, नो डाउट। लेकिन इसको आप जो इसराइल का डोमेस्टिक पॉलिटिकल सीन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए ना, कि बेंजामिन नेतन्याहू करप्शन के इल्ज़ामात, फार राइट गवर्नमेंट, और उनको तो चाहिए कि थोड़ी सी सिचुएशन एस्केलेट हो और फिर ये जो उनको बहाना मिले और ईरान को किस तरीके से ड्रैग इन करें। हालांकि ईरान ठीक है, वो हमास के उनके साथ ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह के साथ तो यकीनी तौर पे हैं, लेकिन इमाम ख़मेनी ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि इस कम अज़ कम हमले में उनका हाथ नहीं है। लेकिन इस वक्त ईरान को ज़रूरत भी नहीं थी, मैं समझता हूँ, कि इस किस्म की कार्रवाई को वो इनकरेज करते, क्योंकि उनका सऊदी अरब के साथ एक मामला चल रहा था। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह अमेरिका ने सऊदी अरब को पैंडर करने के लिए, ताकि वो ईरान के साथ मज़ीद आगे ना बढ़े, चाइना के साथ आगे ना बढ़े, फिर सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट की बात की, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की, और इसराइल को तस्लीम करने के लिए फ़लस्तीन के लिए कुछ कंसेशन मांगी। तो फ़लस्तीनी अपने आप को ये फील कर रहे हैं मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों से कि उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनका जो डिस्प्यूट था वो एक तरफ कर, उस पर एक लिहाज से बैक बर्नर पे डाला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हमास की यही कोशिश या फ़लस्तीनियों की यही कोशिश है कि इस मामले को दोबारा इंटरनेशनल होराइजन पे लाया जाए, लोग इससे बात करें ताकि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आया जाए। अब 2 स्टेट सोल्यूशन के आने से मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर इसराइल किसी तौर एग्री कर भी जाता, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो ही जाएगा, फ़लस्तीनी रियासत कायम हो ही जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो एक मिजाज बना हुआ है ख़ास तौर पे वेस्ट एशिया में, मुझे नहीं लगता
कि पॉसिबल इस वक्त है, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू के होते हुए। और फिर ये भी याद रहे कि अमेरिका में भी इस अगले साल इलेक्शन होने हैं, तो प्रेसिडेंट बाइडन भी अपने आप को इस तरह पोजीशन कर रहे हैं कि वो देखे जाएं कि बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और ही कैन टेक टफ डिसीजन। हालांकि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की थी कि सिचुएशन को डी एस्केलेट करते, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बिल्ड हो रहा है। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते या 10 दिन का उनके पास फूड है, और अब आगे क्या होता है वल्लाहु आलम। लेकिन सूरत हाल ऑब्वियसली फ़लस्तीनियों के लिए बहुत मुश्किल है। और हमारा ये, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जो हमारा अवाम के जो एक लिहाज से जज्बात हैं, जो ऑफिशियल हमारी स्टेटमेंट है उसकी क़तन अक्कासी नहीं करता। और फिर आप ये भी हमारे जहनों में ये बात याद रहनी चाहिए कि सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं, हमारे लिए कश्मीर का मसला भी बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर हम हक़ खुद इरादियत पे यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, ऑक्युपाइड और ऑक्युपायर का जो फ़र्क है वो मिटा देंगे, तो कल फिर हम कश्मीर के हवाले से ही बात नहीं कर पाएंगे। Mr. Nader, thank you for being patient and listening to both our guests on the panel along with yourself. I would like to know that the Western media has been saying that Iran is behind this insurgency or uprising of Hamas. And according to the Western media, this go-ahead was given last week in Kuwait when some Iranian officials met the Hamas people. Do you deny that or you agree with that? I mean, please. I can't believe and trust Western media because they are usually dealing with Palestinian double standard. They always support Israel's occupation, Israel's criminal action against the Palestinian. So what I read actually before I came to your honorable show, that the Americans don't have any evidence that the Iranians are involved in this issue. I think this propaganda created by Israel to defend their image, how they are their losses, high losses, how their image as a superpower country damaged by a few not holding a strong arms, a few freedom fighters with personal weapons can destroy the image of a great army like Israel's army. That's, I think, excuse by Israel's leadership to giving ambition that they was not fighting all the Palestinians. Makes sense. They was fighting other power countries. Now the question is that so this is only lies. Now the question is that Hezbollah, 36 hours before, they had given an ultimatum that if civilian population is attacked in Palestine, then Hezbollah will open the Lebanon border or the border from Lebanese side. Have they done that so far, or are you aware of the fact that they will open it or not? Israel attacked yesterday and today the borders of Lebanon. Killed several of Hezbollah fighters, but until now the Hezbollah, I think what I hear in the news, they're only giving a limited response by attack, I think by missiles twice, by maybe 1 or 2 missiles against Israelis. Until now, I think Hezbollah is patient, don't like to be involved in this battle. And let's see what the coming days going to have for us. My guests are with me. We'll have to come to them after. Take a quick break. वेलकम बैक। और पहले आप बातें सुन रहे थे डॉक्टर मलिया लोधी की, अब्दुल बासित साहब की और नादर अल तुर्क की। 2 मेहमान हमारे साथ अभी भी हैं। अब्दुल बासित साहब, 2 जंगें हो रही हैं बैक वक्त। एक हो रही है जो फ़लस्तीन में आपने जिसका जिक्र किया, हम कर रहे हैं जिसका जिक्र, और एक हो रही है यूक्रेन में। क्या आपको लगता है कि यूरोप अब एक डबल डिलेमा में फंस गया? अब उनको ये नहीं पता चलेगा कि क्योंकि रशिया ने बैक कर दिया हमास को, बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने बैकिंग कर दी है फ़लस्तीन की, तो अब यूरोप लॉन्गर रन में यूक्रेन की जंग लड़ना चाहेगा कि ये इजराइल वाली जंग लड़ना चाहेगा? मेरे ख्याल में यूरोप का इंटरेस्ट तो यूक्रेन में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो उनके बैक यार्ड में है, और ये पहला वाक़या नहीं है। अगर फ़लस्तीनी मरते हैं, शहीद होते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता, और असल उनका मामला यूक्रेन का ज़्यादा है। और मेरा अपना ख्याल यही है कि कुछ अर्सा ये हफ़्ता चलेगा ये सिलसिला,
अगर हिजबुल्लाह टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट नहीं करता इसराइल के लिए, जो कि इसराइल चाहेगा कि वो करे, ताकि ईरान के साथ कोई लिंकेजेस क्रिएट हों और बेंजामिन नेतन्याहू को मौका मिले कि वो इसको इस वॉर थिएटर को एक्सपैंड करे, ईरान को भी थोड़ा सा, चूँकि सऊदी अरब के जो ईरान के मुतालिक खदशात हैं वो दोबारा उभर के सामने आएँ, वो जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो उनके आने का, और चाइना और अमेरिका की कोशिश होगी कि सऊदी अरब और चाइना के दरमियान प्रॉब्लम्स, तो एक पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है। लेकिन जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में उनका तो मामला यूक्रेन ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसके के बजाय कि वो सारा फोकस यहाँ हमास की सूरत हाल पे करे। और फिर जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का इनफॉर्मल इजलास हुआ, इनफॉर्मल कंसल्टेशंस हुई, उससे भी यही साबित होता है कि वो देर काइंड ऑफ इंडिफरेंट टू द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गाज़ा में। तो उनके लिए ऑब्वियसली यूक्रेन इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट एज फार एज I can assess. Mr. Nader, what do you think is going to be the end of this war? Because, I mean, I know there is one emotional statement that you can make, but a logical statement. At the end of the day, don't you think both sides will have to sit on a table and negotiate? So why get more people killed? Why not start working on negotiation now? Why more people killed? Actually, because the radicalism of Israel, who the ministers and prime minister in power right now, turn their back for international laws, international resolutions in favor of Palestine, refusing two-state solution, refusing stability, refusing peace, and dealing with Palestinians as inhuman, and they are refusing to negotiate with the Palestinians since many years. That is why we have these victims in the ground from the two sides in the last few days. The future, which I say that Israel need to obey the international resolutions, need to accept the two-state solution, need to accept the right of return for the Palestinians according to 194 international resolution was made by United Nation in 1948, need to accept that the only way for stability and peace is sitting with the Palestinians, respect the Palestinians, respect and cooperate with Palestinian leadership, Palestinian people, to getting the better future for the next generation in our region. This is the things that I think about it. But what we are suffering right now is according to the silence of the international society, the silence and the blind support of the Americans, British, and some superpower countries in Europe to Israel, to occupation, to settlements, and for the crime against the humanity made by Israelis daily against the Palestinians. There is only one problem, Mr. West Nader. Bank and Gaza Strip. There is only one problem. So when there they is accept only all one of problem. that, then we're going to negotiation. No, I agree with you, but there is only one problem. Hamas is not a country, and Israel legally is not fighting a country that is recognized by the United Nations. So you see, the problem is that a lot of charters, that like 194 or whatever, they are not covered over there. Jihad Islami is still part of our political groups in Palestine, still under the umbrella of our leadership as a Palestinian people. Our leadership addressed by the President Mahmoud Abbas as the President of the State of Palestine. We actually, our leadership in 2021 was going for having election in Palestine. The only reason for delay the elections isn't during Hamas election or not. The only reason for delay the election, the Israelis didn't allow Palestinian people in Jerusalem, the capital of the state of Palestine, to join the election. We couldn't accept that because this doesn't give
a wrong political Right. message that Jerusalem Okay. is not part Okay. of Palestinian state. Let me come to you again, but Dr. Abdul Basit Sahab, So- I'm going to ask you one question in English, and I hope you can answer in English, because I am sure Mr. Nader Al-Turk will not like this question, so he can also answer it if he wants to. And he should understand my question, and he should understand your answer. Now, Abdul Basit Sahab, do you agree with me that when the head of PLO, Mr. Yasser Arafat, went to the White House and he offered his handgun to the Israeli Prime Minister at that time, that hurt the cause of Palestine a lot and set it up back? I mean, it's very difficult to now relate the present situation to what happened in the past. I can see your point, but the question is that nations have to move forward. Yeah. If Yasser Arafat did make a compromise at that point in time, that was perhaps the best thing to do under the given circumstances. But the hope was. But you have the that, advantage of hindsight intelligence, Abdul Basit Sahab. You can be both No, but, upright. but the advantage was that the hope was that Israel, I mean, people thought would be serious to find a permanent solution to the long-standing dispute. And then after the Oslo Accords, the two sides did agree to talk about a two-state solution. But unfortunately, as you know, the time went by, Israel kind of resigned from its commitments. And hence today, where we are, it is so unfortunate that Israel is currently suffering from hubris, from arrogance, and does not even want to talk about a Palestinian independent state. A So solution. the question is, but unfortunately, on the other hand, what we see in Palestine is that Hamas is perhaps does not accept the bailiwick of the Palestinian Authority. And that is the problem, because Palestinians are also kind of divided among themselves. And that Israel or the Western countries, they do not like to engage with Hamas because they consider Hamas, quote unquote, terrorist group. They have proscribed this organization. And if they engage with President or the Palestinian Authority, perhaps they think that negotiations would not lead to anything concrete, or even if President Mahmoud Abbas agrees on anything, it would not be tenable or palatable to the militant groups like Hamas. So there are many complications within Palestinian Authority as well. But at the end of the day, I think international humanitarian law should come into effect. The international community, as the representative of the Palestinian Authority very rightly underscored, it is high time that the Israeli government or Israel should be pushed towards finding a permanent solution to the dispute, because these things will come and go. If today we have a ceasefire, that would not really resolve the problem per se. Yeah. We may have peace for a month or two. We would again see some activity, and again the tension. It's an ongoing thing. It's an ongoing issue. It's an ongoing thing. Yeah. Absolutely. Mr. Nader Al-Turk and Dr. Abdul Basit are with me. I'll come back to them after a break. Welcome back. और हमारे साथ हैं नादर अल-तुर्क और अब्दुल बासित साहब. Mr. Nader Al-Turk, I have very unconfirmed news, and I want to confirm that with you if you have any information on that. And I repeat my question, this is unconfirmed. I cannot confirm it as yet, but I've been told that Israeli forces are actually considering to use tactical nuclear weapons on the Palestinian Gaza areas that have a limited damage, like 20 kilometers or something like that, and they want to use multiple such weapons. Should that happen, that would be catastrophic. But do you have any knowledge of such, or do you have any intelligence of such information? Actually, this is the first time I heard that. Okay. But everything is going to be done by the Israelis to
getting back the image of a superpower country in the region. But I need actually to go back for your question to my brother about Yasser Arafat. Okay. May Allah bless his soul. I mean, your question actually ignoring a very important details. Right, Mr. Clinton, the president of the United States of America at that time, offering two-state solution, but he giving Palestinian state without Jerusalem. He keep Jerusalem under the Israelis' control. No one in Muslim Ummah can accept a Palestinian state without Jerusalem, without Aqsa Masjid. And this is Mr. Yasser Arafat actually in that negotiation was under siege. No, he can't receive any call from outside his house, and he can't call anyone outside USA. In that time, he answered Mr. Clinton that this Aqsa Masjid is not only for Palestinian, it is for all Muslim Ummah. So I need to call my brothers, the leaders of Muslim Ummah in that time. And he called them one by one and asked them that the American offering a two-state solution without Jerusalem to become under part of the Palestinian state. Do you sign this kind of agreement? All of them that time refused to do that. According to that, Mr. Yasser Arafat refused that option, and he was very angry and very aggressive in his answer with Mr. Clinton. That time, Madeleine Albright, the foreign minister, asked Mr. Yasser Arafat to behave himself and keep his voice tune, increase his tune when he's speaking with the most powerful person in the world, the president of United States of America. The answer of Yasser Arafat that time, I invite you to my funeral in Ramallah. And actually Yasser Arafat paid his life as a price for his position in that time, after that 2 or 3 years. So there is no state of Palestine without Jerusalem as it is capital. It's not acceptable for us, not acceptable for all Muslim Ummah. Aqsa Masjid is not only for us, it is for all Muslim Ummah. We was blessed by Allah subhanahu wa ta'ala to be the first circle of defending Aqsa Masjid. This battle right now, it is named flood, Aqsa flood, because the only reason and the main reason for this battle, because the Israelis has a plan to change Aqsa Masjid from Masjid for Muslim Ummah to become a temple for the Jew, only for the Jew. This is one of the reasons of this battle. That's why all Muslim Ummah are on the same page in defending Aqsa. Palestinians are ready to defend Aqsa Masjid by flesh and blood, even to the last Palestinian person or Palestinian child. We are going to defend Aqsa Masjid in all the power between our hands, by battles, as a freedom fighters, as a diplomat, as a politician. This kind of things is not acceptable for any Palestinian and for any Muslim around the world. This is second thing. Israelis actually using aggressive power against the Palestinians, break all the rules, and they are dealing with the Palestinians. Fair enough. I got your answer. I have only 2 minutes. We need a support of Muslim Ummah. Okay, please. I'm sorry, Mr. Nader, but I have only 2 minutes and I need them for Dr. Abdul Basit Saab. Basit Saab, America is sending its naval fleet to the region. अब वो बैरी बेड़ा तो अपना भेज रहे हैं वहाँ पे, बट उम्मत मुस्लिमा में से कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो फ़लस्तीन की मदद को नहीं जा रहा, ये भी तय है. तो क्या रशिया और चाइना से उम्मीद की जाए कि वो मदद करेंगे यहाँ पे ऐसे वक्त में आके, क्योंकि हम लोगों में तो हिम्मत नहीं है. नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रशिया और चाइना वुड गेट इन्वॉल्व देमसेल्व्स फिजिकली इन दिस कॉन्फ्लिगरेशन, लेकिन ये है कि वो डिप्लोमेटिकली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे. जहाँ तक मुस्लिम उम्मा की बात है, अब कल जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, अरब लीग का कल हो रहा है इजलास, देखते हैं उसमें से आया कोई स्टेटमेंट भी निकलती है कि नहीं निकलती, आया वो कंडेम करते हैं इसराइल को, उसकी ऑक्यूपेशन को. कंडेम कर देंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा?
لیکن چلیے کہ یہی بہت بڑی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت مسلم دنیا کے حالات ہم نے ہیں تو ابھی تک وہ بھی نہیں کیا صحیح طرح. وہ بھی نہیں کیا، تو اس لیے اگر وہ بھی ہو جائے گا تو وہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوگا مسلم دنیا پہ، لیکن کوئی توقع زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. اب یہی ہے کہ اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ جو بلاکیڈ ہے غزہ کا، کم از کم جو ہیومینیٹیرین کوریڈور ہے ایجپٹ اور غزہ کے درمیان، اس کو کھولا جائے تاکہ لیکن آپ کچھ کے پرانے معاملات. کولیگ ہیں جلیل عباس جیلانی، کیا آپ ان کو کال کر کے کہیں گے کہ جو انہوں نے کیا وہ بڑا کمزور قسم کی بات کی انہوں نے؟ لیٹس پٹ اٹ دس وے. میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو ہی کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کم از آپ کم اپنا اس کے علاوہ فون بھی تو کر سکتے ہیں نا، آپ کے تو کولیگ ہیں کر وہ. سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی کر سکتا ہوں، لیکن صرف یہی کہہ دیتے کہ اسرائیل مسٹ اینڈ اٹس آکوپیشن آف پیلسٹائن اینڈ ریورٹ ٹو ٹو اسٹیٹ سلوشن. اگر یہ بھی کہہ دیتے تو بہت بڑی چیزیں صحیح پرسپیکٹو میں آ جاتی. اب تو بالکل فلسطین کو اور جو بیچارے آکوپائیڈ لوگ ہیں کئی سالوں سے دہائیوں سے سفر کر رہے ہیں، ان کو اور اسرائیل کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کر، یہ بڑی ذاتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آفیشیل ریئیکشن آیا ہے. مسٹر نادر الترک، ڈپٹی ہیڈ آف مشن آف دا اسٹیٹ ٹیم، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. عبد الباسط صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیہ لودھی، تھینک یو فار بینگ ود اس. اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہے وہ مزید طول پکڑتی جا رہی ہے اور بڑے خوفناک اس کے پروپورشن سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ظلم کے خلاف کم از کم آواز تو اٹھا سکیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.